Hello dear students, welcome you all for today's video lecture. Now, in this video lecture we are going to discuss about a new concept about the biotechnology. In the previous class or in the previous video we are discussing about the biotechnology and what are the introduction part we can discuss. Now, in this video we are discussed about the principle of genetic engineering or principle of biotechnology. यही जो वीडियो रे आमे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखिबा कोन कहला प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कोन कहला द और इट इज अदरवाइज नोन एज रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी जोटा के आरडीएनए बोली कहतला हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो देखो पहले कोन कहबा आज देखिया हमें प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कोन कहला प्रिंसिपल व्हाट आर द प्रिंसिपल मेन बेसिक कांसेप्ट और व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक was first developed by Paul Berg. এই जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस टा को बाय जो टेक्नोलॉजी टा को के फर्स्ट बाहर करथिले द साइंटिस्ट द ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज द पॉल बर्ग के बाहर करथिले पहिले द पॉल बर्ग केबे इन द ईयर ऑफ 1972 से तो कौन कहला द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट पॉल बर्ग इन द ईयर ऑफ 1972 एंड he was awarded a Nobel Prize से कोन करथिले ई जो टेक्नोलॉजी पाई बोली तांको नोबेल प्राइज मध्ये दिया जायतिला केबे इन द ईयर ऑफ 1980 he gets Nobel Prize in the year of 1990 who get the Nobel Prize the Paul Berg in which year in the year of 1980 next he is rightly called as the father of genetic engineering जदि एटा तुम प्राय परीक्षा रे पढे who is the father of genetic engineering the Paul Berg is the father of genetic engineering because he was discovered the technology and he was awarded the Nobel Prize in the year of 1980. Next one, genetic engineering based on এই जो genetic engineering টা বেস করিছি বা the principle is based on the two important discoveries দুইটা हमर important discovery जे कि हमर Paul Berg बाहर करथिले सेई जो दुईटा टेक्नोलॉजी बा से दुईटा बेसिक जिंस हमें जानि दबा तापर हमें टोटल हमें बुझी जीवा कोन होची डीएनए टेक्नोलॉजी तो कोन कहूची जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन टू इंपोर्टेंट डिस्कवरीज इन बैक्टीरिया because it will be we can use the different type of living organisms like bacteria virus and some microorganisms for this technology so there will be two main things which will be viewed in case of bacteria that is one is the presence of plasmids गोटा असला कोन presence of plasmids in bacteria and the another one is the restriction endonuclease hormones or the enzymes which will be secreted in the bacteria body तो बैक्टीरिया रे कोन से जो दीटा जिंस देखा गला जोडा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पे इजी हला ए जो फर्स्ट जिंस आसला हमरो प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया ए जो हमरो प्लाज्मिड प्रेजेंट रहिला बैक्टीरिया रे सेटा गोटे इंपोर्टेंस बिकॉज़ द प्लाज्मिड कैन reproduce or can break down or they will be converted without the permission of bacteria तो से ऑटोमेटिक से कोन होची निजे कन्वर्शन हेई पारती सेटा गुडा हमर बेस्ट रहिला हमर प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया एंड अनदर वन इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच इज अदरवाइज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर सीजर माने कोन रिप्ले कोइची जडे काटिबा पय सहाय्य करा जाउची तो देखो कोन कहला तो द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेनली बेस्ड ऑन द two important discovery दुईटी important discovery का देहरे in case of bacteria bacteria देहरे दीटा main जिंस देखा गला सेति पय बोली कि हमें कोन करले जेनेटिक इंजीनियरिंग ता इजी हला बा हमें करि पारले मध्य सेही जो दुईटी जिंस हला गोटा हला हमर प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड जो प्लाज्मिड रहिला हमर बैक्टीरिया सेल रे एंड another enzyme is present in the bacteria which is known as restriction endonuclease in the genetic engineering or in the biotechnology it is otherwise known as molecular scissor because it will be helpful for the cutting of different fragments the recombinant DNA RDNA हला नै ए जो देखो तापर रहला हमर ए जो दीटा जिंस गला पर नेक्स्ट पॉइंट कोन कहला recombinant DNA री माने पुनी थरे कंबाइंड हिची कोनटा कंबाइन करछ हमें ताको DNA तो कोन इट इज द recombined or the recombinant DNA is otherwise known as RDNA बोली मध्ये हमें कहउछे R for recombinant that means कोन से दुईटी जिंस जोडा कंबाइन हिची the one is the plasmid which is the carrier DNA गोटे रहिला हमर प्लाज्मिड जोटा को हमें carrier DNA बोली कहउछे and another one is the foreign DNA so the first one is the carrier DNA
and the second one is the foreign DNA, that means 2 DNA. I can give a diagrammatical representation also. So बुझ कौन कहला recombinant DNA माने कौन, the main one is the plasmid, one is the plasmid of bacteria and another one is the foreign DNA that will be introduced, or the foreign DNA will be come from the another organisms, ताको हमें foreign DNA बोली कहले एवं जो प्लाज्मिड द्वारा इंट्रोड्यूस करबा सेटा हला कैरियर डीएनए, जोटा कि हमर प्लाज्मिड्स रे प्रेजेंट अछि। तो देखो बिले इजीली तमे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मु करि देछि, तमे इजीली आइडेंटिफाई करि परिबो दिस इज द फॉरेन डीएनए, एटा हला हमर कोन फॉरेन डीएनए टा, एंड दिस इज द प्लाज्मिड और द वेक्टर डीएनए। एटी कहला प्लाज्मिड एंड द फॉरेन डीएनए, दैट मींस we can introduce the foreign DNA, जो foreign DNA टा हम इंट्रोड्यूस करबा का द्वारा vector DNA बा प्लाज्मिड्स रे हमें वेक्टर टा प्लाज्मिड्स टा का द्वारा अछि, it will be present in the bacteria। तो देखो एटा हला हमर foreign DNA, जो जिंसटा कि हमको आवश्यक रही अछि सेही जो DNA टा को हम आनिचे एई जो foreign DNA, and this one is the vector DNA or it is otherwise known as plasmid। एटा को हम कोन बोली कहले प्लाज्मिड बोली मध्ये कहले। एई जो प्लाज्मिड आ हम कोन कहले foreign DNA को रिकम्बाइन करबा। एई जो फर्स्ट प्रोसेस रे हम कोन करछे रिकम्बाइन करिया पूर्व हमें ताको काटिबा पई सहाय्य करिया, काटिबा जे किछि कट करिबा, वी कैन कट द foreign DNA as well as the plasmid by the help of one enzyme which is known as restriction endonuclease। by the help of one enzyme which is known as restriction endonuclease। देखि पाछो पले जे जोटा हम कोन बोली कहथले मॉलिक्यूलर सीजर बोली कहथले, जोटा कि हमको फ्रैगमेंट्स को माने प्लाज्मिड्स और फॉरेन डीएनए को काटिबारे सहाय्य करूची, खंड खंड करिवारे सहाय्य करूची। by the help of restriction endonuclease we can cut the plasmids as well as the foreign DNA। देखो मु कोन कले नेक्स्ट स्टेप रे I can cut the foreign DNA as well as the प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स रो ई पार्ट ता देखो कंबाइन हेनी, ई पार्ट रे किछि जगह खाली अछि, ई जो पोर्शन ता तुम आइडेंटिफाई करि परिबो। ई जो पोर्शन रे हमर कोन हेछि कट हेछि, एटा को हमें कोन करछे डिफरेंट फ्रैगमेंट्स द फॉरेन डीएनए रो फ्रैगमेंट जगह हमें कट कर देले। तो कोन कोडा यूज करि हमें कट करले बाय द हेल्प ऑफ वन एंजाइम व्हिच इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट प्रोसेस we can join this foreign DNA, এই जो foreign DNA সেইটা বা এটা যে কোন ছোট খন্ডটা আমি we can join the foreign DNA fragments into the plasmid body। এইটা নেকি আমি এটা জয়েন করিবা। তো জয়েন করিয়া পাই বলি কি another enzyme will be helpful or the another enzyme will be helpful to joining the fragments of plasmids and the foreign DNA which is known as ligase। the enzyme which is known as ligase। तो से जो एंजाइम ना हला लाइगेज। तो देइटे एंजाइम मन रखिया पड़िबो सबले हमर कोन करछि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमर कट करिवार सहाय्य करछि, सेति पय बोली सेटा को हमें मॉलिक्यूलर सीजर बोली कहले। एंड द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया सेल आल्सो और इन द बैक्टीरिया बॉडी। नेक्स्ट वन the another enzyme which will be helpful for to join which is known as ligase, जोटा हमें कोन बोली कहते ligase enzyme बोली कहते। एई जो ligase enzyme कोन करछि the ligase enzyme will be helpful for to join the foreign DNA into the plasmid or the plasmid into the foreign DNA। नेक्स्ट स्टेप रे कोन करछि मु एई जो प्लाज्मिड से एई जो पार्ट हमर कट हेतिला, एई जो पार्ट रे हमर कोन हे गेला एई जो हमर जो थिला कोन जे फॉरेन डीएनए थिला से फॉरेन डीएनए टा माने अटैच करली एंड देयर विल बी ए कंप्लीट प्लाज्मिड। से कोन हला वर्तमान कंप्लीट प्लाज्मिड रे कन्वर्ट हे गेला। then the plasmid will be transferred into the E. coli bacteria। that means the लिखि transformation, that means the plasmid will be introduced into the E. coli bacteria। when the E. coli bacteria will be divided into two new data cells, then these plasmids will be replicate, ei jo plasmid replicate heijo and this will be the two different individual have the different sequence or that they have the different characters। এই जो দুইটা নয়া ডটার তা প্রোড্यूस হলে जो ইকোলি रो सिंथेसाइज हे की बा डिवाइड हे की सेमान पाखरे कोन हला गोटे नया जो जिंसटा की हमर एठी प्लाज्मिड्स रे एवं अनदर फॉरेन रो जो जॉइन हेची से प्रकार एठी कोन हला डीएनए टा हमर फॉर्मेशनल और द जीन विल बी फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। for by using this recombinant DNA technology we can use some tools। what are the tools? like different type of enzymes like tools जेमिति मु ऑलरेडी मु कहि सारछि मध्ये आमे देखिछे मध्ये टूल्स माने कोन जे सब उपकरण आवश्यक करा जे गोटे जिनिस को तयारी करिया पई बा गोटे जिनिस को कंस्ट्रक्ट करिया पई तक हमें टूल्स बोली कहते।
बा रिपेयर करिया पे जो जिंस का आवश्यक रहउछि ता टूल्स बोली कहउछे। तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें देखिबा व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमर ई जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बाइन पुनी थरे डीएनए टा कंबाइन हेछि ई जो रिकॉम्बाइन डीएनए टेक्नोलॉजी पई केउ सब टूल्स रा आवश्यकता रहिछि वर्तमान हमें डिस्कशन करिबा। तो कौन कहला द टूल्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। जनरली ए जो हमर जो टूल्स ताको हमें कोन करछे तीन भाग रे व्यक्त करछे कोन कोन। द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन व्हिच इज द एंजाइम। नेक्स्ट वन इज द क्लोनिंग वेक्टर व्हिच विल बी हेल्पफुल एज अ vehicle for the DNA। व्हाट डू मीन बाय vehicle? दैट मींस इट विल बी आमे जेमिति बाइक टा यूज करते फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बा बस बा जे कोनो से हमर जो जिनस का हम यूज करते फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सेटा हम vehicles बोली कहते साइकिल बाइसाइकिल और कार्स बसेस like this। The cloning vector is the another vehicle for the DNA। I can also write it। Next one, the third one is the component host। That means the host either the bacteria or the microorganisms। The component of the host for the transformation with the rDNA। That means the recombinant DNA। जो host जोटा देहरी के हम introduce करिवा that means the E. coli bacteria in this case। एई जो केस रे मुझे तो E. coli bacteria नीची that means एइटा हला हमरो सेई जो component host by which we can introduce the plasmid into the E. coli bacteria। So these are the three main tools we can use for the preparation of recombinant DNA technology। So what are these three tools? That is the one is the enzymes, the most important one। Next one is the cloning vector which is otherwise known as vehicle of DNA, and the third one is the component host which is other that means the transformation of plasmid into the host body। We can discuss the what are the enzymes used for the recombinant DNA technology in this video। Okay, so what are the enzymes? There are different type of enzymes which will be helpful for the producing or by the doing the recombinant DNA technology। Some enzymes are the first one enzyme is the lysing enzyme। कौन करछि जो lysing enzyme कौन करछि in order to get DNA this enzyme is used to dissolve the bacterial cell wall। That means आमे जो डीएनए टा को आमे पाइबा पई बा प्लाज्मिड टा को पाइबा पई बा फॉरेन डीएनए टा को पाइबा पई जे कोनोसी गोटे सेल को आमे देखो एठी मु रफ भाबरे एटा जगह टा को यूज करूची जो पार्ट टा को। तो देखो बिले कौन कहला generally it also the lysing enzyme will be helpful to dissolve the bacterial cell wall। एई जो हमर जो बैक्टीरिया रो जो सेल वॉल टा रहउची द आउटर कवरिंग एई जो आउटर कवरिंग टा को डिसॉल्व माने एटा को विथड्रॉल माने डिसॉल्व हे गेला से मिले गेला हला नै जा फल रामे से जो बैक्टीरिया सेल भितरा में इजीली इंट्रोड्यूस हे पारिले। तो सही जो डिसॉल्व करिया पय बोली तो लाइजिंग एंजाइम मेनली हेल्पफुल फॉर डिसॉल्व द बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके जानि परलो कोन होची लाइजिंग एंजाइम हमें यूज करते कोन पे यूज करते बैक्टीरियल सेल वॉल टा को हमें डिसॉल्व करिया पय। द नेक्स्ट अनदर एंजाइम which is known as cleaving enzymes। ए जो cleaving enzymes कौन है again the cleaving enzymes will be divided into three types। ए जो cleaving enzymes का हमें विभक्त करिचे तीनटा टाइप्स रे नैचे ए जो जनरली जो तीन प्रकार जाको बा ए जो हमर जो रहला cleaving enzyme जनरली कोन करंती they are used to break the DNA molecules। DNA molecules मानन को ब्रेक डाउन करियारे भांगीबारे खंड करिबारे माने सहाय्य करंती। तो cleaving enzyme कौन कहला these are used to break the DNA molecules। These are three types। The first one is the exonuclease। The first one is the exonuclease। हमें जानि छ जनरली हम जदि भी टिके थिंक करिबा एक्सो माने बाहरे एंडो मींस भितरे। तो देखो कौन कहला exonuclease कौन कहला it removes the nucleotides from the termination end either from the 5' end or the 3' end। That means if it is a DNA एटा जदि हमरो DNA fragments ता the DNA strand will be started from one strand will be start from the 5' to the 3' then another strand will be started from the opposite end that is the 5' to the 3' end। like एई जो हमें जतोळे कि हमें एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम टा यूज करूते से कोन करते इट रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स। एई जो पोर्शन रे हमर कोन अछंती डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर अछंती एई जो न्यूक्लियोटाइड्स जाक जो माने अछंती एई जो न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द 5' एंड और 3' एंड रु से रिमूव करिवारे सहाय्य करूची जो एंजाइम टा सहाय्य करूची से जो एंजाइम रो ना हला एक्सोन्यूक्लियस। तो जनरली एक्सोन्यूक्लियस कोन करे पिले
exonuclease will be helpful to remove the nucleotides from the either the 3' end or the 5' end of the DNA strand. तो DNA strand रो हमरो 3' end बा 5' end रू जो हमर जो रहिला कोनटा रहिला सेथिरे जो न्यूक्लियोटाइड्स रहिला से जो न्यूक्लियोटाइड्स मानो को रिमूव करिवारे सहाय्य करे भल से बुझो बिले कांसेप्ट हला तापर हमें प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखिबा तापर हम लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट तापर देखो नेक्स्ट कोन कहला द अनदर एंजाइम व्हिच इज द पार्ट ऑफ द क्लीविंग एंजाइम द अनदर एंजाइम व्हिच इज नोन एज एंडोन्यूक्लियस तो तुम इजीली मन रख पारे गोटा हला एक्सोन्यूक्लियस आउटला एंडो एक्सो माने बाहर एंडो मींस भीतर तो आमे जनरली ए प्रकार आमे चिंता रे बा जे जो टेक्निक रे मन रखे मु जनरली मन रख कोन कहूची से जोटा एक्सो माने बाहर एंडो मींस भीतर तो इडा हम ऑपोजिट हिसाब रे मध्ये मन रख दी परिबा तो गोटा हला एक्सोन्यूक्लियस एंड अनदर वन इज द एंडोन्यूक्लियस तो एंडोन्यूक्लियस कोन करछ सर इट हेल्प फॉर द कट द स्पेसिफिक पोजीशन इन द डीएनए it allows to help to involve only one strand of DNA to duplex that means endonuclease कोन कला exonuclease कोन कला nucleotides remove कर दला कोठरू 3' end or the 5' end of the DNA next सेई जो DNA रे कोन करते endonuclease कोन करते it will be helpful for the cut the specific पोजीशन विथ इन डीएनए एई जो डीएनए रे स्पेसिफिक पोजीशन एई जो पोजीशन टा मु कट करली तो ये जो काटिया पे गोटे स्पेसिफिक पोजीशन टा कट करिया पे जे सहायता कला से हला एंडोन्यूक्लियस एंड इट आल्सो हेल्प टू इन्वॉल्व ओनली वन स्ट्रैंड टू डीएनए डुप्लीकेट तो ये कोन करछि जे एई जो पार्ट रहला हमर कट कला परे देखो मु डायग्राम करूछि एई जो पार्ट हमर जो रहिला डीएनए रो आमे काटि के आनिचे एई जो पार्ट टा को जे कोनोसी गोटे स्ट्रैंड से करूछि डीएनए डुप्लेक्स फॉर्मेशन करिबा पई नेक्स्ट असला द मोस्ट इंपोर्टेंट वन व्हिच इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड these are the hormones or the enzymes these are the enzymes mainly sorry the restriction endonuclease these are the enzymes they will be cut the DNA duplex ये कोन करते जो डीएनए डुप्लेक्स को ए जो इटा एंडोन्यूक्लियस ता जो एठी रखी थिला एटा टोटली काटी दवा माने पूरा बाहर कर दवा ए जो खंड खंड करके फॉर्मेशन करिवारे से जो पूरा ईच एंड एवरी पीस को जो काटी दवारे सहायता कला हमर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ता सर एंडोन्यूक्लियस करथला परा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टोटल काटिवारे सहायता कला एंडोन्यूक्लियस ता कोन कला जे कोनोसी पोजीशन को ए जो पोर्शन रो गोटे स्ट्रैंड को डुप्लेक्स फॉर्मेशन करिया पई सहायता करछ माने टोटली से जो डीएनए रो त फ्रैगमेंट्स रे अलगा करिनी but restriction endonuclease which will be helpful for the cutting the DNA so that it is otherwise known as molecular scissor also. The next enzyme which will be helpful for the recombinant DNA technology is the DNA ligase. तो एठी मु ऑलरेडी कहि सालिन तुमको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ता मु जनरली काटिबारे सहायता करछि आ डीएनए लाइगेज हमर कोन करे द लाइगेज एंजाइम व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर द combine the foreign fragments and the plasmids ये कोन करछि कंबाइन करिया सहायता करछि तो देखो पिले कोन कहला the DNA ligase it helps to join the two individual fragments that means एटा एई जो गोटे इंडिविजुअल फ्रैगमेंट थिला फॉरेन डीएनए रो एई जो प्लाज्मिड्स रो जो कट पार्ट टाको ए जेटा को ये जॉइन करिवार जे सहायता करछि से हला हमरो डीएनए लाइगेज the next another enzyme which will be helpful for the recombinant DNA which is the alkaline phosphate. What is the alkaline phosphate? It removes the phosphate group from the 5' end of double strand. এই जो 5' end अछि ना देखो पहिले এই जो 5' end अछि DNA रो एठी जो हमरो गोटे थिला ये फर्स्ट एंजाइम थिला लाइजिंग एंजाइम ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करथिला नेक्स्ट हमरो अल्कालाइन फॉस्फेट कोन करछि ये रिमूव करछि जति सब फॉस्फेट ग्रुप जा जति थिले ये ताको रिमूव करिवा सहायता करछि जति सब फॉस्फेट ग्रुप कोड थिले एट द 5' end रे जति सब फॉस्फेट ग्रुप जा थिले सेई जो फॉस्फेट ग्रुप मानन को रिमूव करिया पई तो देखो एटा जो फ्रैगमेंट छला एटा मध्ये तार 5' এই जो 5' रे जति सब फॉस्फेट ग्रुप जाक थिले এই जो फॉस्फेट ग्रुप जाको रिमूव कर दबो के रिमूव करिवो द अल्कालाइन फॉस्फेट तापर नेक्स्ट वन इज द सिंथेसाइजिंग एंजाइम एठी ना रही सिंथेसाइजिंग रही गेला माने जतोल के हमें पूर्ण थर लाइगेज एंजाइम देखि से जतोल कंबाइंड हला एई जो कंबाइंड ताको पूर्ण नुवा गोटे जिंस रे सिंथेसिस करिवा बा नुवा जीन बा नुवा डीएनए प्रोड्यूस करिवा पय जे सहायता करते से हला सिंथेसाइजिंग हार्मोन तो सिंथेसाइजिंग हार्मोन और द सिंथेसाइजिंग एंजाइम कोन कला इट हेल्प्स टू सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड on suitable templates जति सब suitable templates रे इट जॉइन कले हमें ए जो जॉइंट्स रे सेटा को हमर नुआ रे पूरी थरे तयारी करिया पई बा सिंथेसिस करिया पई सहायता कला हमर जो हार्मोन टा रहला से रहला हमर सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स
So these are the different tools that are used, or the different type of enzymes that we can use to prepare a new DNA strand, or we can use these tools for the genetic engineering, or we can use these for the preparation of recombinant DNA technology. In the next class or the further classes, we are discussing about the what is the main process of DNA technology or recombinant DNA technology. Okay, you have to write it. These are the most important enzymes that will be take part in the formation of, or the by the going process on the recombinant DNA technology. Okay, students, thank you.